Okay, so I'm you're learning. selling your projects to the seniors. Senior, yeah. So at that time में मुझे पता ही नहीं था कि what is a startup. Mixed opinions about having relationships while achieving something ambitious. It's like इस पे फोकस करना है, रिलेशनशिप पे या बिजनेस पे. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑब्वियसली अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो you will get revenue. As a student, I would recommend you start building companies, start building, startups of like the small business, or you have to find your target customer first. कि जो फीचर्स तुम बनाए हो अभी तक, वो फीचर्स को यूज करने के लिए कौन कौन कस्टमर है. Welcome to the first episode of our exciting podcast series. This is our first in a special lineup where we bring in some of the most inspiring startup founders to share their stories, journeys, and lessons with all of you. As students, we all dream of achieving something big, and today's guest is someone who has done just that. From overcoming failures to building successful businesses, our guest has seen it all. Hi, everybody. My name is Divij, and so today we have with us Mr. Trilochan Parida, the founder of Typof, which is an incredible e-commerce platform that has empowered thousands of artisans and small businesses to transition into the digital world. His entrepreneurial journey is one of resilience, purpose, and inspiration. And I'm sure there's so much we can learn from his experience. And it's really great to have you with us, sir. Sir, I'm sure our audience would love to hear directly from you. So, could you tell us a bit more about Typof? What exactly does Typof do? And how did you come up with this idea to create this platform? So, thank you so much for this opportunity. So I can say my whole entrepreneurial journey plus what exactly and how Typo started. Uh, Pehle, let me tell you how we can. Let me tell you my the journey from my BTech. Because uh, to be honest, when I joined computer science in local college in Odisha, that so we like I haven't touched computer that time, right? So I directly joined to BTech computer science, but I never used computer before. उसके बाद थोड़ा सा डर था कि हाउ आई कैन डू इट बिकॉज कंप्यूटर साइंस मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं था सो बट यू नो सो एक होता है कि once you jump into the particular things then you learn step by step but मेरे साथ बहुत miracle हुआ है like you know I master that computer science like see when you started a BTech right so it's first concept or our first language you have to learn is C, right? So उसमें the first semester में so you can say I topped that topic, right? Oh, So that's how I started. So that's confidence built on my career. Like yeah, I can do something on this trade like computer science. So that's how I started. Then, interestingly, I love those languages. I quickly learned PHP, trying to build some of project of my seniors and providing, selling them in a very economical, like very कम प्राइस में बेच दिया मैं ठीक है चलो okay. it's So I'm you're learning selling your projects to the seniors. senior yeah so Oh, that's great. how that's how it started right ऐसे ही start हुआ so then one day when uh, like I reached to my fourth year and I have to do a project right so that time mein, I have done a social network right it's completely in Java so see first I learned C then PHP then different language I experimented in that time because it's interesting day by like I would say all day it's spending with languages only that technical stuff so you're learning because भूखा था मैं उससे पहले कुछ नहीं जानता था and uh, somehow I got the opportunity to learn those languages so that's how it's happened so then I joined one of company that Booking Genie as a co-founder and CTO
Then I had experience more than 5 years there. So building SaaS product, uh, reach to million dollar revenue. Then in 2020, I have figured out, because the my BTech days, or after BTech, I have started my own institution where I was to I used to sell websites, right? And plus, helping us BTech students to make their projects, and how I'm actually as a guider, like how you can create your final year project. Plus, I'm providing local businesses to website development services. So that's how it's started. Somehow it's within me कि मुझे एक प्लेटफॉर्म बनाना है, so people will love to build their business or websites easily, right? वो एक था पहले से, but then after booking genie join किया, booking genie में that's a completely different industry. We build software for hotels, right? So sometime फिर again realization हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ कि this is not me, right? So then I started Typof. So Typof B, so it's not only my efforts I've started, it's actually my customers' efforts, right? When I live booking genie, so that moment of time I was chilling around, like हिमाचल जा गया था, so वहाँ पे chill कर रहा था, right? So that टाइम में ना बहुत सारे ऐसे मेरे कस्टमर बन गए थे, कस्टमर इन द सेंस मतलब पहचान के लोग जो है, जो होम डेकोर प्रोडक्ट, हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट, बिकॉज उड़ीसा में दैट्स मोस्टली हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स, इफ यू Yeah, नो right. पटचित्र, देन पिपीली में बहुत सारे चीजें बनती है, तो हैंड लाइक हैंडीक्राफ्ट चीज बहुत सारे हैं, और ऐसे भी बहुत सारे दोस्त बन गए थे। तो उसी मोमेंट में सो दे वर सेलिंग ऑन इंस्टाग्राम, एंड ड्यूरिंग कोविड, वो 2020 में और 2021 में, सो वो कोविड ही चल रहा था, राइट? उस टाइम में एक ऐसे ऑनलाइन का डिमांड बहुत था कि कैसे ऑनलाइन में सेल करें अभी, and so that's how it started. I think more than 40 customer, like before we have product the type of, we enrolled more than 40 customer, because so we started with a Instagram page, and then helping them to grow how you can sell online, creating a single product catalog page. Then that's how Typo started. So then one of my founder, Divya, if you know, so she used to sell Sambalpuri sari in Odisha, right? She Okay. also facing the same issues, because in market, if you go for different market, marketplaces is okay, but you have to pay a huge amount of commissions. Then second is, if you build your own e-commerce website, it's not easy as for sellers, because they are not techie, right? So they couldn't understand how to build a website. Even they don't know in which place you have to put your banner, what exactly you have to put, or what are the products you have to showcase in your website is not easy to determine from for as a seller, right? So that's how Typof started. So we built a platform where you can easily upload a image and put your content, as you are putting content on different social media, right? So that's how we built a platform where any seller or any anyone can have that basic sense of putting images and content, then your website is ready. So no need to do much things on platform, right? So that's how Typo started, and that's how like I can say more than so initially we started with artisans, so we acquired more than 10,000 artisans, and helping them to build their product catalog and websites. Then so now we are completely open for all the categories of business, like anyone have their Okay. own e-commerce websites. Yeah, that's the story. Okay. So what can I understand from this? Like, is Typof is a no-code tool
Yeah, which helps small businesses and other artisans to build their website and sell their handicrafts or products online, even if yes, they don't know how to make the website, even if they exactly. don't know how to code, right? Yeah, 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 Sir, in one news article, I read that Typof is similar to like Shopify. yeah, yeah. So, could you, for our audience, could you elaborate on that? Like, if it's similar to Shopify, but there should be some differences, right? For like Obviously. people, Yeah, obviously, will even after if there are some differences, then only people will shift to Typof, right? exactly. See, when you build a application, right, a SaaS application, first of all, we think, there is a obviously there is a gap, right? Yeah. Uh, as I mentioned earlier, so all the existing platform in market is uh, you need some tech savvy people who can manage, right? If you go opt for Shopify or different tools exist in market, so those are completely depends on developers. So they build for developers, right? Any Yeah. agencies or developers can build a website on Shopify. If you are a tech savvy and you are a seller, then somehow you can manage, right? Otherwise, you have to hire an agency. Then second is in Shopify or another competitor, I can say that WordPress, WooCommerce, right? So they have multiple third-party tools. Okay, to run your e-commerce website, you need to install those third-party tools, right? And again, first of all, there are multiple costs you have to bear. Like first is you have to pay Shopify. That's a subscription fees plus commissions. Second is you have to hire an agency. Then you have to pay for that. Third is then continuously you have to improvise your e-commerce. I would say the sales and everything. So you need third-party tools, right? For that also you have to pay. So there is multiple cost point if you opt for different platform. But here type of is single cost, that is subscription and flat rate, right? So you don't have to pay commissions, you don't have to hire agencies, and you don't have to install multiple third party tools because we are building in-house tools which is required for your growth. I can give an example. you know um, in Shopify, for creating a coupon or advance coupon, I would say you need to buy one tool to manage those coupons, right? Okay. So this is a small example, but in Typof, we are building completely, in-house and helping you to, because as I mentioned, right, we started with 40 customers or artisans. We know what exactly they are looking for because Typeof is completely built on input from customers. It's not built from our side. Yeah, yeah, ये करना है, ये नहीं करना है. But it's completely, उनके input लेके we have built our product. It's completely artisan friends, completely small business friendly website builder, right? Yeah. So that is the difference, right? And in SaaS business, always a gap, I would say. If you are building as a you are student low, I would say, so don't think about your competitor. You try to build the product which uh, helps businesses or helps anyone, your target customers, right? That is more important. You don't like worry about your competitor because competitor is there, they have some set of customers they have created, Yeah. that time which is not comply with this time. So this completely different story, you can build a different story for your customer or your target customer. So that would help you to build your product. Yeah. Yeah, sir. So, as you just mentioned, for the students who want to set up their own company, own startup, so we all know the importance of taking that first step for Yeah, to setting up your own business. Many students, they often have ideas, but they struggle to turn them into reality.
Hmm. and they often find it hard to take that very first step. As they say that to convert zero to one is the most difficult job. True. So could you walk us through your initial journey? How did you recognize this problem, and how did you start working on it, and what were the initial steps that you took in your journey? Yeah. See, I already mentioned. Still, I would elaborate on that part. Uh, See, when first of all, that Sparks was there because मुझे बनाना था कि I have to build a website builder where क्योंकि मुझे manually बनाना था पहले जब मैं बीटेक से start किया, so I was manually creating a website, right? Like जो simple service based company you can say, right? उस टाइम में एक फील आ रहा था, ओ उस टाइम में, एंड आई वुड से दैट टाइम में मुझे पता ही नहीं था कि व्हाट इज अ स्टार्टअप, इट्स कंप्लीटली ट्रेडिशनल बिजनेस, राइट? सो उस टाइम में क्या होता था कि जो किसी बिजनेस के पास जाओ, मुझे वेबसाइट चाहिए, सो यू क्रिएटेड एंड होस्टेड इट इन डिफरेंट hosting services like GoDaddy and those services, right? सो उस टाइम में ना एक मुझे पता नहीं था मार्केट में इतना क्या वेबसाइट बिल्डर है, ओनली वर्डप्रेस वी न्यू। तो समटाइम्स वी फील कि हाँ कि अच्छा प्लेटफॉर्म बना है जो कि ऑटोमेटिकली ये कस्टमर जो है ऑटोमेटिकली वेबसाइट बना सके। वो एक स्पार्क पहले से ही था, but after that, a lot of circumstances, ups and downs came, so I joined booking genie। then some time I feel कि नहीं ये नहीं करना है मुझे, जो इंटरनली जो स्पार्क्स है उसको डायरेक्शन देना है। सो वो एक चल रहा था दिमाग में। फिर अगेन जब कोविड हुआ, सो दैट अपॉर्चुनिटी पूरा उभर के आया कि हाँ ये अभी राइट टाइम टू डू इट। सो कोविड एक्चुअली हेल्प्स मी टू डिसाइड to go this path. And as I mentioned, that 40 customer initially connected, they actually pushed me to do it. So that helps। So अगर कोई स्टूडेंट स्टार्ट करना चाहता है और आप लोग स्टार्ट करना चाहते हो, सो द बेस्ट थिंग इज यू क्रिएट ए ऑडियंस फर्स्ट। सो ऐसा सब बोलते हैं कि भाई कैसे ऑडियंस बनाओगे, सो यू जस्ट पिक योर फोन, कॉल योर टारगेट ऑडियंस की मैं एक ऐसा ऐसा कुछ बना रहा हूँ, are you looking for this service, do you have any challenges on this thing, right? So suppose अगर वो चैलेंज में जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, राइट, अगर वो हो जाता है ना, सो ऐसा नहीं है कि अगर 100 कॉल किए और 100 जन ही मतलब एग्री करते हैं, देन यू विल क्रिएट अ प्रोडक्ट, नॉट लाइक दैट। if 20% clicks, if 20% your target audience think yeah you are building a right product, you are in the right direction, I would say you start. That is enough for your validation, and start with MVP। Reach out to them again, ask them to use free as a product, then gathered inputs, and then product evolve होगा, उसके बाद you can launch publicly। So that is the process you can follow। Otherwise, to be honest, when अगर मैं स्टार्टिंग में मैं जो किया, मेरे पास अगर कस्टमर नहीं होता, अगर मैं कुछ करना चाहता, तो इट्स completely like yeah I will build my product because I notice that problem or gap in market, I would do that। एंड बट मुझे पता था कि कस्टमर को रीच आउट करने से थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, तो या दैट माय प्रोडक्ट विल रन। एंड द सक्सेस मंत्र आई वुड से, इफ यू आर मार्केट में ना बहुत गैप है, एनीथिंग यू आर बिल्डिंग, इफ यू आर सस्टेनिंग, इफ यू आर स्टेइंग इन अ मार्केट, then you will get the your destination, you can Yes. reach that path। yeah So, like just you mentioned about, firstly acquiring a small set of customers who might be interested in using our product. So, I think in this networking will play a very important role. exactly yeah So would you like to would you like to highlight the importance of marketing while for the entrepreneurs? See, to be honest, I'm a hardcore, I would say, the developer, right? So marketing side is very still I'm learning It's not your marketing expertise. exactly। Yeah. So I'm learning marketing, but
So in a booking genie, I learned a lot of things because as a initial days you have to do everything. It's not about your position and what exactly the role you are playing, but you have to do marketing. You have to research on different fields, operation, and everything. So that's how I learned a lot of things in booking genie. Then I applied in Typof also. So marketing is one thing you have to decide. What exactly you are you are more spend on marketing or you more spend on products. I believe always product will play a critical role when you are building a SaaS or you are building a product company, right? It's not a marketplace. Marketplace is completely aggregator where marketing is more important because people awareness is you have to create, and in SaaS product you have to create word of mouth reference, connecting multiple people directly, not from market. Market is always a I would say is a secondary things for us because building a product very important because already competitor is there, so they are doing well. So you if you do market well and your product is not ready and product is not performing, then nothing will work. People will come but people will churn. And in type of that's a beautiful things we experienced. Once you come to type of there is no way to go, like there is no direction, मतलब path ही नहीं है जाने का because हमारा churn rate is very negligible. जो आया वो गया नहीं है. So that's how we are building a product. Product में ध्यान दो और product के ऊपर जो service जो customer support है अगर वो सही से देते हो, so you know that clicks a lot of things. Okay, very, very well said, sir. So our team did a background research on you, and we have collected some data. So Okay. we like saw your LinkedIn and all the news Mm. articles you did the interviews. So before Typof, you had a company called C Tech, Yeah. Yeah. which provided software services to small businesses. I don't know how much this information is true, which was eventually shut down in 2015, right? Yes. Yes. So many people view such closures of businesses as a failure, but in the entrepreneurial world, failure is often seen as a stepping stone to Exactly. success. So Exactly. can you take us back to that time and tell us a bit about that company So and how yeah. did you See. navigate that experience emotionally and mentally? And what motivated you to keep pushing forward despite that setback? Yeah. See. So I already mentioned that. My I started in my second year of BTech, right? Yeah. So then one of my cousin and me started that CEO Webtech, which providing website service, right? Okay. So that is the company CEO Webtech, and CEO Webtech is not a failure. I would say CEO Webtech is an experiment for us. So in that moment, we didn't know what is startup. It's completely building a traditional business, helping business to uh, grow their field because digitally. So that's how we started CU Webtech, and CU Webtech is intentionally closed. It was not failure for us. It's intentionally closed so that we, as a like when I realized a lot of things in startup, then booking genie came to Mm. picture, so that's why it's closed. It's not like failure for us. We Okay. transactional and everything, revenue was good, everything was good. It's not a failure for us. We like I can say we upgraded a lot of things closing that one, right? Because the service we're providing is just not scalable. It was just a service company like website building, service we are providing. So that's why we closed that one. So it's not a, I would say it's not a failure or not a, it's not a, again, it's Yeah, completely, it's a I totally good thing. understand. So you adapted your company to the market needs. That's Yeah, beautiful. exactly, So, exactly. sir, can you, sir, elaborate on that? Like, how important is the adaptability we need to have when we are starting something? So we need to find our market demand, right?
So according to that, we have to change and upgrade our settings and upgrade our things what we are selling. So how important is that in This today's is this is very interesting. I would say when as a founder, right? Idea is every day you will have new idea. So you have encounter new problems and you want to solve, right? But staying your core focus or core vision, what exactly you are doing now. Suppose we are building type of, right? Type of is, we are saying we help all the sellers. So if they are selling offline, online, or any aggregator platform like channel like Amazon or Flipkart, so wherever you are selling, we will be your enabler. We'll help you to manage your inventory, manage your orders, manage your operations in a single platform. So that's how Typof is looking forward, right? So if I would say, so something comes in mind, like very few days ago, like I got to like I want to build a one tool where completely helping developers, right? okay. So again, you thought because as I am a developer, always that weaknesses is there where I could make more impact on that field. How can I help developers? How can make more impactful videos? Because if you research well, so one of my YouTube channel was there. I started in 2018 and 19, right? I again discontinued that because focusing on the product building, not YouTube channels. So yeah, so if you focus on what you are building, that is important. Rather, building a or adaptability is obviously required in your field only. Suppose we are building e-commerce or you are building uh, helping small business owner build the tools, adapt the technology to help that set of customers and that set of your target customer, right? So that is important. That means adaptability. It should not be like suppose nowadays AI is becoming a trend. So you adapt AI how your customer can get benefit out of it, right? Yeah. So that's how you can look into that things, right? Adaptability obviously there. Obviously, without adaptability, Nokia, the story. So a lot of story are there. If you not participating in a trends, then will Yeah. again it will be one of those company. So that is very, 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 very critical. You have to do it. There is no option to stay behind. Suppose in AI, we have built many tools in AI where, if you go chat GPT, search about, suppose I can give an example, right? In most of the sellers know how to use chat GPT. Somehow they are searching or write prompt where suppose generating product description for their product, right? Product description, titles, because that is important for their SEO, right? And Mhm. one more thing in Typof is built for SEO only, like because we have seen lot of startups uh, like started business doing well because they are doing Facebook campaigns. One Facebook campaign the stop, their business stops. And Facebook campaign you need capital, right? Yeah. Right. So we realize that so that we are building a platform where you don't give much effort on social media campaign. Better you can organically you can get more traffic or more customer. So that's how type of build. So I was giving an example of, if you are good at chat gpt, you are giving a right prompt, generating content for your website, it's okay. But most of the, I would say 98% of the sellers don't know how to prompt a good in chat gpt, right? Yeah. So we have created one tool, typeof.ai, if you check.
So you can create your product descriptions, you can create blogs. It's completely, it looks like a human writing for you, right? It's completely different from ChatGPT. And ChatGPT will give you a lot of information, so will be, straightforward and giving you the right information for about your product, and you can generate that. So we adapt immediately, right? So we need that with for our customers, so we adapt and building the product. So that's how adapt in entrepreneurial journey and building a company. It's every day something come new things you have to adapt. That is a mandatory things for any entrepreneur or any founders. Yeah, Yeah, so we have to change with the situations. obviously, but focusing on your vision, not like मैं Yeah, right, sir. ई कॉमर्स में कर रहा हूँ, कल जाके एंटरटेनमेंट में कुछ बना दूंगा, ये क्योंकि Yeah. एंटरटेनमेंट ट्रेंडिंग में है. सो दैट एग्जैक्टली नॉट वर्क. बट आपको उसी पे फोकस करना है जो कर रहे हो. Yes, sir. Well, very well said, sir. So now we will we'll shift little bit towards your personal life. Okay. So we did some research and we got to know that you and your wife are not only life partners, but you are also business partners in leading Yeah. Typof, which Yeah. which is like a very impressive dynamic. We would say, like, we hardly see such power couples out there who are also running a company. So, sir, could you share with us how No, your in journey India, started? yeah. So in India, many couples are there, right? If you Yes, sir. know Mama, Sugar, others are there, right? So in India, I would say it's a good thing to have as a founder, co-founder, your life partner. There's a lot of things. See, so I'm telling my story because we started. We like both were in booking Genie. Then we started Typof. Typof was the I would say it's a baby for us. Every time and the interesting part is we are not syncing each other. Like so मैं अगर कुछ बोलता हूँ, so she always टेबल में पहले जो इंसान है जो बोलेगी कि नहीं ऐसा कुछ अलग करते हैं. So that helps a lot, right? Life partner, it doesn't mean कि बिजनेस में सेम थॉट लेके आए और सेम इज कम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, राइट? हमारे लिए मैं टेक बंदा हूँ, तो मेरे को प्रोडक्ट बनाना आता है, राइट? But she is more operational thing. She can handle well, right? और थोड़ा बहुत business अगर she understand well. So I understand more into product, she understand operation and business. So ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया ना. So that's how we are building Typof, right? Typof में she is मतलब एक क्रिटिकल रोल में है जहाँ पे सॉरी, जो मेरे कस्टमर जो बोलता है ना मेरा चर्न रेट नेग्लिजिबल है बिकॉज ऑफ Yes. हर, राइट? शी इज टेकिंग केयर ऑफ operation and customer support. So that's how our customer are happy, and that's how Typof is sustaining. So लाइफ पार्टनर मैं ज्यादा तो पर्सनली मतलब मेरे को उतना कुछ फील नहीं हो रहा है कि क्या है डिसएडवांटेजेस. मेरे लिए तो अभी तक एडवांटेजेस ही है, मतलब प्रोज ही है मेरे लिए. मतलब अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि हम लोग देखो पर्सनल लाइफ जब होता है ना कि जब दिक्कतें आते हैं, आई डोंट नो, मेरे लिए अच्छा हुआ है बिकॉज हम लोग ऑलवेज थिंकिंग अबाउट टाइप ऑफ, घर पे हो या ऑफिस पे हो, ठीक है? सो देयर इज नो डिस्कस अबाउट पर्सनल थिंग्स मोर. सो उसमें क्या होता है ना, यू फोकसिंग ऑन योर बिजनेस, और वो भी कंप्लेन नहीं कर सकती अगर तुम ऑफिस में मैं आज रह गया या ज्यादा काम पड़ गया, तो वो कंप्लेन भी नहीं कर सकती बिकॉज शी नोज व्हाई आई एम हियर, राइट? Correct, sir. Correct. हम कहाँ जा रहे हैं, सो वो सारे चीजें ना बैलेंस हो जाता है मेरे हिसाब से. अगर तुम्हारा लाइफ पार्टनर को फाउंडर है, सो यू मतलब बहुत सारे चीजें क्लैरिफिकेशन हो जाती, मतलब क्लियर होता है कि हाँ ये कर रहा है, ये वो कर रहा है. सो नो वन इज डिस्टर्बिंग ईच अदर, सो चलता है. इसीलिए मेरे हिसाब से तो अच्छा है.
लाइक बहुत सारी चीजें बिना बोले ही समझ जाते हैं। हाँ हाँ, तुमको और एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है ना। करेक्ट करेक्ट। So, sir, like in today's world, people have very mixed opinions about having relationships while achieving something ambitious. So, हम्म, but I see from your experience, this has turned out to be a very positive thing for you, where you got that support from the right person at the right time. yeah So, yeah. for the students who are out there, who still are in this dilemma, like, is this thing good for you? Is it important to have that right person? So, what do you want to say to them? What advice would you give them? See, I am not a that person I can give a advice, but I will share my experience. See, it's completely depends on you as a person, right? If you are a guy, understand the business and understand the focus, like किस पे फोकस करना है, रिलेशनशिप पे या बिजनेस पे. So हर कोई बोलता है you should balance, right? In entrepreneurial journey there is no balance. You have to sacrifice those things. You have to sacrifice relationships. You have to sacrifice your I would say the family things initially, because that more importantly is building your product or your startup. Correct. Rather, you are focusing on the family and relation. Obviously, जिसके पास होता है ना कि एक लिमिट हो जाता है कि एक जो तुमको चाहिए वहां पे रीच होने के बाद ना वो देखते हैं पीछे कि मैं बहुत सारे चीजें खो गया है, Yes. Yes. खो दिया हूँ मैं, ठीक है. तब जाके रियलाइज होता है कि तब वो कहीं पे भी पोस्ट करते हैं तो बोलते हैं कि यू फोकस ऑन योर रिलेशनशिप, यू फोकस ऑन योर बिजनेस, सॉरी योर फैमिली. अगर तुमको फोकस ऑन रिलेशनशिप और फैमिली में है ना, तो देन यू विल नॉट रीच दैट पॉइंट. आप फोकस ही करते रह जाओगे रिलेशनशिप में और ये में. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्टार्टिंग डेज में यू हैव टू ट्रांसपेरेंट टू योर पार्टनर कि भाई मुझे ये करना है, सो यू आर ओके विद दिस, देन लेट्स कंटिन्यू, अदरवाइज यू फिगर इट आउट क्या क्या करना है, ठीक है. तो रिलेशनशिप करना है या बिजनेस करना है, सो बोथ कैन बी डन इफ दैट सपोर्ट्स यू विल गेट, राइट. सो मेरे को तो मिल गया था वो सपोर्ट. So because he more passionate than more me, right? Because मेरा एज थोड़ा ज्यादा है कि मुझे थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि बिजनेस का, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, और थोड़ा मेच्योरिटी भी वो भी है कि हाँ ये होता है ना कि इतने करने के बाद तुमको एक आइडिया हो जाता है कि ये चलेगा नहीं चलेगा, बट सी इज मोर बुलिश अबाउट एनी आइडिया, एग्जीक्यूट फास्ट, वो करती है. बट मेरे से फास्ट एग्जीक्यूशन नहीं होता है, बट वो कर लेती है. सो दैट्स आई टाइप ऑफ समहाउ एग्जीक्यूट हो गया जल्दी, और हम लोग एक मतलब रेवेन्यू स्टेज में हैं जहाँ पे वी आर सस्टेनिंग आवरसेल्फ, राइट. सो एक चीज वो बहुत सारे कम्प्लीमेंट मतलब फीचर्स हो जाते हैं अगर लाइफ पार्टनर्स में, तो वो चल पड़ेगी. अगर मेरे हिसाब से तो बिजनेस फोकस करना है. अगर वो बिजनेस आप फोकस कर रहे हो, वो फोकस करेगी ऑटोमेटिकली, राइट. अगर आपको उसके साथ रहना है, अगर नहीं रहना है तो दे विल फिगर इट आउट कि क्या क्या करना है, ठीक है. तो Correct. दैट्स हाउ इट्स हैपन. Yeah, it's great. I mean, you just mentioned like you focus more on the product building, and she's more towards this marketing and business development. So I think yeah, you guys are a great match. I mean, you guys are filling each other's voids. I mean, she is good in some things, and you are Yeah, good at other things, and together you guys are good at most of the things. So I think right. it's a great dynamic, I would say. Yeah, yeah. सो सर मतलब हर एक की जर्नी में ऐसे काफी चैलेंजेस आते हैं. तो आई कैन ओनली इमेजिन यू while you were building Typof, there would have been so many challenges you faced. So can you share a particular challenge that stands out in your mind, where you thought like, no, I can't do it, I should be shutting this, or anything related to that, and how did you navigate through it? See, yeah, that every founder or entrepreneurs has their own challenges. We have also those challenges. And see, when we started that, thinking about how we can solve problem for sellers, right? And having competitors, having uh, uh, setbacks. A lot of times we have got rejections from customers.
because we didn't like see building a perfect product, building a all the features. It's not one night job, or it will take time, right? So you have to showcase your product in terms of like the small business, or you have to find your target customer first, कि जो फीचर्स तुम बनाए हो अभी तक, वो फीचर्स को यूज करने के लिए कौन कौन कस्टमर है. सो देन यू हैव टू टारगेट दोज कस्टमर्स ओनली. वेरी स्मॉल में भी हो सकता है. देन धीरे धीरे आप फीचर बनाते जाओ, प्रीमियम फीचर बनाते जाओ, देन यू कस्टमर सेगमेंट बढ़ाते जाओ. सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. एंड हमारे जो चैलेंजेस है ना, मैं एक्चुअली देखो, मेरा एक्सपीरियंस मोस्टली इनटू प्रोडक्ट है. ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग में ना वी थॉट सेल्स फोकस नहीं करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट ग्रोथ लीड करते हैं. लाइक पीएलजी, मैंने पीएलजी करते हैं, तो हम लोग प्रोडक्ट लीड ग्रोथ. ठीक है, हम लोग सोचे कि ये बेटर रहेगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट अच्छा बनाएंगे तो कस्टमर ऑटोमेटिकली आएंगे और कर लेंगे, मार्केटिंग थोड़ा बहुत करते हैं. बट इनिशियल डेज में हमको रियलाइजेशन हो गया कि इन इंडिया पीएलजी इज नॉट ए, अभी नहीं बनेगा वो, क्योंकि लोग आके अपना प्रोडक्ट अपने आप सीख के बना नहीं सकते. यू हैव टू हेल्प देम टू बिल्ड देयर वेबसाइट, और जो भी आपका सर्विस है, तो उनको एक हैंड होल्डिंग चाहिए. ठीक है. So then we quickly changed our strategy, and we focus on sales. Sales means uh, calling them, asking them the issues, problems they are facing in the current platform. Then we are giving the solutions, right? So this is the model we are completely focusing. So initial days वही एक हमारे लिए चैलेंज रहा है. और अभी, और जब एआई आया, वी आर इंट्रोड्यूस्ड वन ऑफ लाइक वेबसाइट बिल्डर, एआई वेबसाइट बिल्डर, राइट. उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस वही है. मैं सोचा कि अगेन वेबसाइट, एक जो कस्टमर है, राइट, जो स्मॉल बिजनेस ओनर है, वो आएंगे एआई में, वेबसाइट क्लिक क्लिक करके बना देंगे और इजीली बन जाएगा, उनका रेवेन्यू बन जाएगा. बट वेबसाइट एआई में जो बनते हैं ना, सो दैट आपको एक वेबसाइट तो दिखेंगे, बट वो ट्रांजेक्शनल वेबसाइट नहीं बन पाता है. ठीक है, वो एक इशू हुआ. इनिशियल अडेप्टेबिलिटी, मतलब अडेप्ट हम लोग तो कर लिए, बट कस्टमर अडेप्ट नहीं किए. ठीक है. सो देन अगेन वी कम बैक टू आवर ट्रेडिशनल legacy product, where we are actually getting revenue, and helping customers to go live and sell online, right? So फिर हम लोग उसमें क्या किए ना, और जो लेगेसी प्रोडक्ट है उसमें एआई इन्फ्यूज किए, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भरना होता है. जस्ट राइट योर प्रोडक्ट टाइटल, सो पैरेलली योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड एवरीथिंग विल बी जनरेटेड, राइट. सो वो सारे सारे छोटे छोटे फ्यूजन्स किए हैं. जैसे आपको एसईओ में टाइटल डिस्क्रिप्शन देना है, सो ऑटोमेटिकली वो भी जनरेट हो जाता है. तो वो छोटा छोटा इम्प्लीमेंटेशन हम टाइप ऑफ में एआई के थ्रू किए. सो देन इट्स सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम. सो वही है, चैलेंजेस तो ऑब्वियसली रहेगा कि एंड जब तुम लुकिंग फॉर ए फंड्स, वो एक चैलेंजेस होता है. बट हमारे टाइप ऑफ में अभी हम लोग वी आर नॉट लुकिंग फॉर फंड, सो दैट्स व्हाई समहाउ वी आर स्टेबल. मतलब हमको जरूरत नहीं है. तो इसीलिए हम लोगों को इतना चैलेंजेस नहीं लग रहा, बिकॉज we are earning enough money or enough revenue so that we sustain, right? So that's how Typof is like going on. So इतना challenges तो obviously है, but uh, we are figuring out, and we have that milestone to reach. So obviously we'll do that. You rightly said, sir. We have to focus on our product first. I remember one statement from, I think, Steve Jobs. So he said, like, make a great product and customers will come to you. So I think that's what Apple is doing currently. So they're making a great product, and yeah, customers are coming naturally. So yeah, we have to change our thinking and our product according to our customers, right? So yeah, Yeah, Apple में भी वही हुआ था ना. So initial they have struggled a lot, right? Because they are competing with IBM, then Microsoft sometime में आया, फिर वो
कंप्लीटली फोकस किए कि मेरे को अच्छा प्रोडक्ट बना के निकालना है, तो देन वो प्रोडक्ट जब आया फिर एवरीथिंग Hmm. इज हिस्ट्री, राइट? So yeah, product is very important. So yeah, sir. Like many people who are starting entrepreneurship today, they're not doing it, just to earn more money. Like we see many startups today who are like a purpose-driven company. They Mm-hmm. want to make the difference in the industry. Like taking the example of Typof, I can see like Mm-hmm. how Typof has specifically benefited small business and artisans. So like, sir, what advice would you give to someone who is trying to, balance between making profit and purpose in their startup? See, making if you go for profit only, आप सस्टेन नहीं कर सकते हो मार्केट में। एक एक दिन आएगा, इफ यू आर नॉट गेटिंग रेवेन्यू, यू आर स्टक समवेयर, देन ना आपको एक मोटिवेशन नहीं मिलेगा कुछ करने का। अगर पर्पस है, ऑब्वियसली देखो पैसा तो मनी सबको कमाना है, सो दैट इज अनदर एंगल वेयर यू हैव टू डू इट, सो उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बट अगर पर्पस नहीं है क्या कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो, तो देन मुझे नहीं लगता यू कैन सस्टेन इन मार्केट। मतलब आपको बहुत सारे डाउन्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, देन मनी विल नॉट गिव यू दैट मोटिवेशन एक प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, Yes. बैलेंस तो नहीं बोलूंगा, बैलेंस तो नहीं हो सकता है। देखो, इफ यू हैव, देयर आर टू वे टू लाइक गेट फंड्स और प्रॉफिट जो है। प्रॉफिट तो अगर प्रॉफिट डिस्कस कर रहे हो तो प्रोडक्ट अच्छा बनाना पड़ेगा, सो दैट पीपल विल बाय योर प्रोडक्ट एंड यू विल गेट प्रॉफिट, राइट? अगर पैसा खुद को कमाना है, देन तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। खुद को कमाने के लिए आई डोंट नो द वे, लाइक क्या बोलना चाहिए अभी। मेरे हिसाब से पर्पस ड्रिवन तो जरूरी है, नॉट आई वुड से सोशल इम्पैक्ट और सोशल ऑर्गेनाइजेशन वेयर कंप्लीटली दान देना है, बट रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जहां पे यू कैन गेट मोर प्रॉफिट एंड रेवेन्यू, एंड दैट सॉल्विंग समवन्स प्रॉब्लम। अगर सॉल्व नहीं कर रहा है किसी का प्रॉब्लम, देयर सो देयर इज नो पॉइंट टू बिल्ड अ प्रोडक्ट, or there is no point to build a startup. So problem solving is very important, and obviously अगर problem solve कर रहे हो तो you will get revenue। मेरे को ये ऐसा लगता है कि फर्स्ट ये करना है, प्रोडक्ट अगर सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम, तो आपको वरी नहीं होना चाहिए कि ये मेरे को पैसा देगा या नहीं देगा। वो देगा, ऑब्वियसली देगा, बिकॉज यू आर सॉल्विंग समवन्स प्रॉब्लम एंड दे विल पे। Yes, sir, very very rightly said. I mean, of course, अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो I mean, हाँ, प्रॉफिट खुद आ जाएगा। प्रोडक्ट ऐसा भी नहीं है, बीच में हम लोग ज्यादा एज ए टेकी ना, ऑब्वियसली मतलब थोड़ा ऑब्सेस्ड होते हैं कि मतलब प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, बट समटाइम्स यू यू नो स्टॉप योर इमोशंस एंड फोकस ऑन सेल्स ऑल्सो। Correct, sir, correct. अगर प्रोडक्ट बना देंगे, बहुत सारे फीचर्स ले आएंगे और कस्टमर ही नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट। एंड वो फीचर जो बनेगा ना, वो फीचर सिर्फ आपका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बनेगा, नॉट कि दैट सॉल्विंग योर कस्टमर्स प्रॉब्लम, राइट? Correct, sir. तो कस्टमर जरूरी है, उनका इनपुट जरूरी है टू बिल्ड अ प्रोडक्ट। सो यू नो इसको बैलेंस करना है आपको, कस्टमर एंड प्रोडक्ट में बैलेंस करना है, और पर्पस एंड मनी में बैलेंस नहीं करना है। यू हैव टू पर्पस ड्रिवन फर्स्ट। अगर वो नहीं होगा, आप उसे नहीं कमा सकते हो। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, हम लोग जो बीटेक करते हैं, एमबीए करते हैं, वो क्या है, एक पर्पस है। उसके बाद आप जॉब कर रहे हो, कमाने के लिए सोच रहे हो, राइट? तो पहले यू हैव टू एक्वायर योर स्किल्स। आई वुड से बिल्डिंग ए प्रोडक्ट, बिल्डिंग ए स्टार्टअप, सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इज ए स्किल, देन यू कैन गेट रेवेन्यू आउट ऑफ इट। Correct, sir, correct. Okay. Also, sir, like we know, like entrepreneurship is a very steady process. मतलब हम्म, ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलती है। आज हाँ, जितने मतलब भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हम अगर यू आर देखते हैं, लकी देन। yeah, of course, sir. So like all of them, they have started, way back, and then slowly and steadily they have, made changes according to the market, according to their customers.
at that time. So, but generally, when a person is starting from scratch, you know, we expect like okay, आज नहीं तो कल सेल्स बढ़े, थोड़ा सा और रेवेन्यू हो, लेकिन वो इमीडिएटली नहीं हो पाएगा. So in those times it is very important, you know, to stay motivated. I am sure कि like जब आपने टाइप ऑफ स्टार्ट किया तो इनिशियली यू नो लाइक एकदम से तो सेल्स नहीं ही बढ़ती है, तो इनिशियली वो काफ़ी एक you know एक saturation पे चलता है. So at that time what was your motivation to, you know, to still keep on working, keep, you know, every day just be जस्ट motivated? प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर वही था कि देखो, अगर तुम्हारे पास वो पर्पस है ना, मोटिवेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. इसीलिए तुम्हें बोला, अगर पर्पस है तो आपका रेवेन्यू हो या ना हो, इट डजंट मैटर. यू कंप्लीटली फोकसिंग ऑन योर विजन कि मुझे क्या करना है, तब तक करना है जब तक वो पॉइंट में जब तक रीच ना कर लो. ठीक है, पैसा, रेवेन्यू इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट. यू विल गेट रेवेन्यू ऑब्वियसली, बिकॉज देखो, अगर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, रियल प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो रहा है, दे विल लव टू पे, बिकॉज कस्टमर्स आर लाइक दैट, राइट? तो मेरे हिसाब से तो वही है भाई, तुमको मोटिवेशन यहीं से मिलता है. और मेरे लिए मोटिवेशन कस्टमर से बहुत सारे मिले हैं, क्योंकि हम लोग जो बिल्ड किए, मैं बोला ना कि वी गॉट 40 ऑड कस्टमर, दे ऑलवेज पुश अस कि ये बनाना है, ये करना है, ये फीचर्स लाना है, ये हमको हेल्प हो जाएगा. तो दैट्स हाउ टाइप ऑफ बिल्ड, राइट? वो एक मोटिवेशन हमारे लिए फ्रॉम द डे वन वी गॉट. सो वो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प हो गया, देन बिजनेस बनाने में भी हम लोग वही 40 को बोले कि भाई पैसा दोगे या खाली ऐसे मिलेगा तो ले लोगे. तो दे एग्री टू पे, राइट? स्मॉल अमाउंट, बट दे एग्री. तो दैट अनदर मोटिवेशन, लाइक अगर दे आर पेइंग, तो उसके बाद क्या है, मतलब हमको प्रोडक्ट बनाने में क्या प्रॉब्लम? अगर 40 जन पहले से ही है विदाउट लाइक लॉन्च आवर प्रोडक्ट, सो उससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है? और देखो, प्रोडक्ट बनाने और जो होता है ना ओवरनाइट सक्सेस सबको नहीं मिलता है, बट मिलता है. सम केसेस आर देयर वेयर इंस्टेंटली, मतलब ओवरनाइट सक्सेस मतलब ऐसा होता है कि देखो, तुम उससे पहले 2-3 प्रोडक्ट बनाए होगे, उसमें फेल हुए होगे, और उसके बाद एक सडनली कुछ प्रोडक्ट बनाते हो जो कि क्लिक कर जाता है. सो इन दैट केस वो प्रोडक्ट आपको ओवरनाइट सक्सेस दिया, बट उससे पहले बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे बना के फेल हुए हो. और राइट, वो एक होता है, ओवरनाइट सक्सेस तो नहीं है, बट यू इट्स अ जर्नी. एंड आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, और वो कभी आपको चैलेंजिंग लगेगा नहीं. अगर आप कुछ जो आपके स्पार्क्स है, जो पैशन है, अगर उस पे काम कर रहे हो ना, तो यू डोंट फील इट्स अ चैलेंजिंग. एंड यू ऑलवेज व्हेन, मतलब सुबह उठोगे तो यू फील मोटिवेटेड कि हाँ, आज ये करना है, इससे बात करना है, इसको सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम है. तो इट्स ऑलवेज ए मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. आपको मजा ही आएगा मेरे हिसाब से, अगर यू आर इनटू ए पर्पसफुल स्टार्टअप और डूइंग समथिंग व्हिच सॉल्विंग ए समवन्स प्रॉब्लम. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे मुझे स्टार्टअप करना है करके कुछ भी पिक करो, कुछ भी आइडिया या कर दिया, तो वो पेनफुल होगा आपका जर्नी. अगर जो रियल प्रॉब्लम आप फेस करते हो, और जो रियल प्रॉब्लम अगर मिल जाता है, तो यू आर लकी टू परस्यू दैट direction. So that's so important. So, sir, as you all know, like we saw pandemic like last like 5 years ago, right? So we saw in that pandemic like many businesses shutting down and like many startups failed to flourish, right? But along with that, we saw like many people shifting to digital, right? They Yes. started using all got internet, and many people shifted to digital world. They got digital literacy increased, right? So, can you tell like what made Typof flourish in those times? I like मेरे लिए तो saw like yeah, Typof flourished and rapid growth was seen in Typof's business, I think, in that exactly. times. So, what lessons would you give to people out there in from your experience in terms of finding an opportunity in terms of adversity? मेरे लिए तो that was an opportunity for us because during COVID selling online was a
one option where all the business are looking for. So that's why Typof started, and that 40 customer came because of COVID. Because वो online Instagram में sell कर रहे थे. Somehow they feel Instagram is not enough because every time you have to send product catalogs and product photos to your Yeah. customer. It's a hectic job for them, right? So then they reach out to us कि भाई मुझे ऐसा कुछ कर दे जो product catalog देख लेंगे वहाँ पे and they will choose my product and easily buy. So in that period, actually, we got huge traction and huge inquiry about कि मुझे कैसे वेबसाइट बनाना है, मेरा प्रोडक्ट कैसे मैं बेचूंगा. So that moment में मेरे लिए तो मतलब हमारे लिए तो बहुत अच्छा था. मतलब it's a great opportunity for us because every business want to go live, sell online. And to be honest, when type of started, हम लोग सोचे थे not on the e-commerce website. उसी टाइम में ना चाइना में बहुत चल रहा था कि वीडियो कॉमर्स, राइट? अच्छा. कि लाइव दिखा के सेल करना है प्रोडक्ट, राइट? Okay, so like जस्ट लाइक sellers will show their product on live हाँ, video and just then like they will us, sell. suppose Okay, you are okay. my customers audience and I am a seller. तो मैं ऐसे फोन दिखाऊंगा, आप फोन बोलोगे, खरीदोगे. So that's how हाँ. live video commerce works. So उस टाइम में हम लोग पहले जब टाइप ऑफ सोचे थे ना, टाइप ऑफ इज टेक्निकल टर्म इफ यू अंडरस्टैंड, राइट? तो हम लोग वो सोच के किए थे कि हमको लाइव कॉमर्स करना है. बट हम अगेन जैसे मैं बोला ना कि बिफोर बिल्डिंग ए प्रोडक्ट वी रीच आउट more than I would say 300 customers, right? मतलब कस्टमर्स मतलब जो इंस्टाग्राम में है, जो सेल कर रहे हैं, उनको रीच आउट किए. तो उनका एक चैलेंज था कि मतलब बिलो 5% जो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाए, राइट? उनका एक चैलेंजेस उस टाइम में था कि देखो हम लोग सेलर्स हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, नॉट एन इन्फ्लुएंसर, नॉट ए Hmm. कंटेंट क्रिएटर, राइट? मैं ऑनलाइन आके कोई भी प्रोडक्ट ऐसे दिखा के आई आई कुड मतलब मेरे से नहीं होगा. इट्स नॉट feasible for now. And even many brands or sellers are from tier 2 city, the tier 3 city, right? So internet video is not that that internet is not Yeah, उस yeah. टाइम में नहीं हो रहा था कि मैं वीडियो बना सकूं इतना टाइम बैठे और कर सकूं, ठीक है? So somehow that challenge was there and अभी नहीं है, अभी somehow it's evolving, ठीक है? So that it's easy to uh, I would say easy to go live, sell online. So वो एक वीडियो कॉमर्स का फ्यूचर है और उस टाइम में नहीं था. तो टाइप ऑफ दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, राइट? Yeah. देखो मेरे लिए तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटी आते रहते हैं. इट्स यू डोंट थिंक कि पेंडेमिक हुआ है तो फ्यूचर में ना अगर कुछ भी बिल्ड कर रहे हो इट्स ऑलवेज अपॉर्चुनिटी आएंगे. सो यू हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी इन द राइट टाइम. आपको लेना है वो ऑप्शन, लेना है मतलब कि मुझे करना है वो, मतलब ऑब्वियसली वो ऑप्ट फॉर दैट और नॉट, यू हैव टू डिसाइड. बट अपॉर्चुनिटी ऑलवेज कम्स टू यू एंड नॉक Yeah. योर डोर. यू हैव टू फिगर आउट कि ये मुझे करना है या नहीं करना है. बट ऑलवेज अपॉर्चुनिटी विल कम. सो पेंडेमिक सबके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं था. वहाँ बहुत सारे दैट कैजुअलिटी हैपेंड, लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड, बट still some startups grown and some startups failed. So it's depends. Yeah. So matlab, it's now or never case. Like when opportunity comes, you have to grab it. Actually, Yeah. yeah. So, sir, for many students who want to go towards the entrepreneurial journey, there is always a fear of failure and uncertainty कि कहाँ से start करें, क्या होगा. मतलब बहुत risky side है एक मतलब entrepreneurship. So, like, what advice would you give to these students who are still in this hesitation stage? I mean, what can they do to build that confidence to start this Yeah, journey? yeah. सी एक हिंदी में एक बॉलीवुड अभी मूवी में था ना, रिस्क है तो इश्क है, ठीक है? Correct, sir. Correct. आई वुड से अगर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जिसका है वो रिस्क के बारे में नहीं सोचेगा. एंड फेल्योर देयर इज ए टर्म, बट मैं बोलूंगा सो वही हेल्प करता है टू ग्रो फर्दर, राइट?
जब फेल नहीं करोगे तो सीखोगे क्या? Correct. अगर फेल्योर से ही बहुत सारे सीख मिलते हैं. सो यू ऑलवेज, I would say, you look as, failure your opportunity to learn more. और आपके पास अभी ना, इफ यू स्टार्ट अर्ली, मतलब मेरे हिसाब से ना, अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, आई वुड से गो अर्ली. क्योंकि जब तक तुम राइट एज में पहुंचोगे, जब उस तक ना लॉट ऑफ एक्सपीरियंस यू विल गेट एज ए स्टूडेंट. आई वुड रेकमेंड यू स्टार्ट building companies, start building startups who actually helping businesses or helping anyone those has some issues or problems. If you are solving that, I would say go for it. Don't wait the experience, as you mentioned, right? कि मुझे जॉब करना है. Somehow, lot of people are, my many friends are doing jobs, right? And they still they are getting a good amount of salary or stipend. But see, आपको ये ना completely जो entrepreneurial mindset होता है ना, वो इतना सोचेगा नहीं कि मुझे पहले एक जॉब करना है, या मुझे एक ये मैं करूंगा तो रिस्क हो जाएगा, मैं सेविंग कर लूंगा कुछ, उसके बाद स्टार्ट करूंगा. देखो, सेविंग पैसा से, आई वुड से, मुझे पता नहीं है, बट स्टिल आई वुड से कि सेविंग में कितना कंपनी चलाओगे तुम? अगर तुम्हारा सॉल्व जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ये अगर सॉल्व नहीं कर रहा है तो पैसा नहीं मिलेगा, और वो एक दिन खत्म हो जाएगा. देन यू फील स्ट्रगल कि नहीं हो रहा है यार, बंद कर देते हैं. बट मेरे हिसाब से नहीं, वो डायरेक्टली जंप इनटू दैट सिचुएशन. यू विल गेट लॉट ऑफ learnings. You can get how you can manage without money, right? Correct. How you can still motivated to build something for your target customer. You are not getting revenue, so that is a very important things to learn. और ऐसा भी है कि क्या बोलते हैं, that's a, if you are building something great, then people are there to invest. So you reach out to them, they will give you like good amount of money so that you can run your company. So मुझे तो नहीं लगता है. रिस्क तो है, रिस्क तो ऑब्वियसली है, मतलब रिस्क तो किसमें नहीं है. Correct, sir. आज हम लोग अभी बात कर रहे हैं, कल किसको क्या होगा हमको पता थोड़ी है. क्या रिस्क है, कुछ किसी को भी पता नहीं. रिस्क तो ऑब्वियसली मतलब जीने में है, हम लोग चल रहे हैं, इसमें रिस्क है. तो व्हाई, मतलब इतना सोचना क्या है? करना है तो करना है, मतलब वो अगर पर्पोज आपके पास है तो रिस्क के बारे में कोई सोचता नहीं है मेरे हिसाब से, और सोचना भी नहीं चाहिए. इतना सोचना नहीं है, मतलब करना है. फेल हो गए तो फेल हो गए, क्या लोग तुमको निकाल देते हैं थोड़ी कि हाँ आज फेल हो गए और एक उसके बाद जॉब कर लेना, क्या है? एटलीस्ट आप अपने आप को बोल तो पाओगे कि आई हैव ट्राइड इट. अगर Yes, sir. अगर ट्राई नहीं करोगे, सो देन ऑलवेज इट विल बी ए रिग्रेट फॉर यू कि हाँ यार, मैं एक बार ट्राई कर लेता, एक बार ट्राई कर लेता तो हो जाता. ठीक है ना? तो मैं बोलूंगा, तो द डे वन यू फील मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ करना है, तो कुछ करना है तो करो. मतलब डोंट स्टॉप योरसेल्फ कि हाँ मैं 1 साल के बाद करूंगा, 2 साल के बाद करूंगा. स्ट्रैटेजी वो एक बार में, जॉब इज, आई वुड से, इज ए माया है आपके लिए. वंस यू गॉट, देखो वो किसके लिए अच्छा होता है, आई वुड से कि अगर यू आर वेल एस्टेब्लिश्ड इन योर, मतलब फैमिली साइड, एवरीथिंग इज वेल, आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो देन समहाउ यू जॉब के बाद कर सकते हो, क्योंकि यू हैव ऑल कंट्रोल ओवर योर मनी, राइट? बट हमारे जैसे हम लोगों का क्या होता है कि मैं, हाँ, टू बी ऑनेस्ट, ये एक बढ़िया टॉपिक मैं बोल सकता हूँ कि जब मैं स्टार्ट किया ना, आई कुड जॉइन एनी कंपनी, राइट, द इनिशियल डेज. बट मैं क्यों ज्वाइन नहीं किया जानते हो? एक डर था मेरे मन में, क्योंकि मैं जहां से बिलोंग्स करता हूँ, जिस फैमिली से बिलोंग्स करता हूँ ना, वंस जॉब में घुस गया ना, और उसका जो रेगुलर सपोज सैलरी है, और उसमें ना मेरे घर पे पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि मेरा बेटा कमा रहा है, और दैट मनी इज
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी और माय फैमिली, राइट? क्योंकि मुझे देना पड़ता होगा, मतलब देना होता, राइट? Yeah, of बट course. और वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो जाता है, और जॉब में घुस गए ना, फिर लोन हो जाएंगे, घर का लोन हो जाएंगे, गाड़ी का लोन हो जाएगा, फिर उसको एक लूप में आप चले जाओगे, ठीक है? और उसी डर के वजह से मैं ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं जॉब कर लूंगा, क्योंकि मेरे घर मेरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। और उस टाइम मैं जॉब नहीं किया, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड फैमिली को बोल दिया था कि मेरे ऊपर डिपेंड मत हो, यू फिगर इट आउट कैसे घर चलना है, ठीक है? तो समहाउ मेरे को वो हेल्प हो गया कि मैं इनिशियल डेज में ही निकल गया मैंने कि नहीं, मेरे पे डिपेंड मत करो, तुम अपना अपना फिगर आउट कर लो, मैं अपना फिगर आउट कर लेता हूँ, जब सब सही होगा देख सोचेंगे। तो वो एक चीजें है कि ये डिपेंड करता है कि आपका क्या सीन है, ठीक है? सो दैट्स हाउ यू कैन फिगर इट आउट कि मेरे को क्या करना Yes, sir. As you mentioned, कि the right time to start is now. We should not wait कि बाद में करेंगे. Yeah, very correct. And we should focus more on like they say कि कर्म पे फोकस करो, आउटकम पे तो ठीक है मतलब है। अगर हाँ, वो तो बाई प्रोडक्ट है, मतलब होगा ही yes. है। So, sir, I would like to ask, like, what top three qualities or habits that you think all the aspiring entrepreneurs should focus on building um, while they are getting into this startup culture? देखो, स्टार्टअप में मैं भी समटाइम्स आई दैट आई आई लाइक मतलब वो नहीं होता है। देखो, एक डिसिप्लिन जरूरी है कि तुमको स्टार्टअप में ना बहुत सारे चैलेंजेस, स्ट्रेस आएंगे। Clean enough, you are continuously uh, I would say not exercise, not gym. I would say, meditation or your मतलब कुछ कुछ भी एक्टिविटी जो आपको हेल्प करे टू स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन में रहना जरूरी है somehow। अगर डिसिप्लिन में नहीं है तो यू विल फील स्ट्रेस, यू विल फील ब्रोकन कि नहीं हो रहा है, नहीं करते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आएंगे, राइट? वो एक चीज स्ट्रांग होना है डिसिप्लिन में। एनी हाउ यू हैव टू, जैसे कुछ भी एक्टिविटी, सुबह चलने जाओ, एनी मेडिटेशन यू कैन डू, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट आई वुड से। other than that, nothing required, like it's completely your focus, your passion, your जो पर्पोज हम लोग डिस्कस किए, अगर वो है, आपको और कुछ फॉयल का जरूरत नहीं है। इट विल बी इग्नाइट यू एंड डेली कि भाई ये करना है, बिकॉज एंड मैं बोला ना, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको कस्टमर ही पुल कर लेंगे, भाई ये Correct, बनाना sir, है मेरे correct. को, राइट? सो आपको आप वो एक, जैसे बोलते हैं, सो वंस यू हैव क्राउड एंड इफ यू जंप इनटू दैट क्राउड, क्राउड ही आपको पिक करके एक जगह से एक जगह ले जाएंगे। यू डोंट रिक्वायर टू गिव एफर्ट्स, राइट? तो मेरे हिसाब से तो वही है कि फर्स्ट मोर दैट इज very important, which is discipline. Second is, if you have passion about what exactly you are building. Passion means, मैं बोलूंगा इन टर्म्स में, अगर आप वो जो कर रहे हो उसको लव कर रहे हो, मतलब अच्छा लग रहा करना, so that is passion for me. So you, if you have that and you are loving your product, you will love what you are doing, so that is enough for you to go long way. So that's how it's help any entrepreneurship founders. Yeah. Yeah, yeah. Thank you, sir. It's really great, sir, to see what Typof is doing. It's really great, and I want you to share the vision what you see for Typofs in like next 5 years. Where do you see your company going? देखो, it's, to be honest, in India there are no such serious company who are helping small business owners to build their online presence, right?
Okay. बहुत सारे हैं, बहुत सारे competitors है, but all are distracted because a lot of things happening now, AI and all. So a lot of distraction, a lot of things are there, but we want to focus only one thing: how we can give good quality of product, how they can sell more effectively online, right? So that is the vision. And currently we have whatever the customers we have and revenue, so that we will reach in 5 years. If you see, so we are building, currently we are building only e-commerce website, right? So in 5 years, we are building, I would say, whole stack of commerce, just like managing your warehouse, inventory, Okay. different channels in a single platform. So that is the vision, right? So in a single platform, you can manage complete online channel and offline channels where you can get sales or revenue from in a single platform. So that is a vision. Yeah. वही Okay. बनाना है, मतलब completely building right product for the commerce industry. Yeah. Okay. Yeah. I'm sure Typo would reach that milestone really fast, and all the best to you, sir. Thank Uh, you. Thank you. Uh, yeah, so sir, your journey has been very inspiring for all of us. And so, as we wrap up, is there any final piece of advice that you would like to give to our students, who are willing to go towards entrepreneurship and Yeah. message? Yeah. So you guys are smart enough, but I would say क्या होता है ना कि डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ इन द रियल वर्ल्ड कि ये चल रहा है, डोंट गो बाय सोशल मीडिया में क्या चल रहा है. फोकस is very important. You focus on what you want to build and the real problem you are solving. Focus on that, and success is always a byproduct. You focus on your karma or your whatever you are building. That is enough. Yeah, so I think you guys are like too far like from us, because a lot of opportunity you are getting in so through social media, and many podcasts happening in the India world. So you nowadays a lot of things you are get a lot of information you are getting, right? So initially it was not there. You if you see like Nikhil Kamath podcast and many podcasts happening in India. So lot of real facts and how they build a business and how they created a business. You are learning every day. I would say so. This is very helpful for any founders. So I would say focus whatever you are doing and love you like. और एक भी बात है कि अगर जो काम कर रहे हो अगर उसमें प्यार नहीं है, अगर लव नहीं है, तो करते रहो जब तक आप ऐसा काम मिल ना जाए जो आपको उससे प्यार ना हो जाए. So उस टाइप का है. So do whatever you are doing passionately and complete dedication with complete dedication. Yeah. Yeah, thank you very much, sir, for joining Thank us today you. and sharing your incredible journey with all of us. There is so much to learn from your experience, and I'm sure your insights will leave a long lasting impact on our students. We wish you and Typof all the success as you continue to grow and inspire future entrepreneurs. Uh, to everyone who is listening, thank you very much for turning in. Don't forget to check out our upcoming episodes where we will continue to bring more stories of entrepreneurs, more inspiring experiences. And until next time, keep dreaming big, keep learning, and keep building your future. Thank you.